So you can recognize here a triangle has three sides, three vertices and three angles. Okay, you know the parts. So a triangle totally has six parts. Okay, and these six parts also called elements. Okay, this is elements of a triangle. So you can see here, here is six parts. So what you considered? अगर हम एक ट्रायंगल में बोलते हैं कि उसके सिक्स पार्ट्स है, तो आप उसमें क्या कंसीडर करते हो? बिकॉज व्हेन आई कंसीडर दैट दिस थ्री थिंग्स, दैट मीन it has 9 parts, but no, you have only considered its sides and its angles. Understood my words? एक ट्रायंगल में हमें क्या कंसीडर करना होता है? उसके साइड्स को और उसके एंगल्स को. ओके, तो अगर हम कंसीडर करते हैं, योर क्वेश्चन इज व्हाई नॉट वर्टिसेस? बिकॉज when you take a vertex, you can see here two sides meet at this point and here make an angle. ओके, यहाँ पे आप देखो कि इस वर्टेक्स पे दो साइड्स मीट कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ पे आपको क्या मिला? एक एंगल मिला. दैट्स वाई वी हैव टू टेक ओनली साइड्स एंड एंगल्स. दैट्स वाई अ ट्रायंगल हैज टोटली 6 पार्ट्स और एलिमेंट्स. ओके, एक ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं. याद रखिएगा, ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. ओके, and again you classified this triangle into 2 parts. Classified, that means you can give a name to triangle according to its sides and according to its angles. एक बात यहाँ आप क्लियर समझ लो कि जब हम ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं तो उस ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स. ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम इसको नेमिंग करना होगा, अगर इसको क्लासिफाइड करना होता है, कैटेगराइज करना होता है, तो हम क्या करते हैं? तो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. एक पार्ट को हम जब नेमिंग करते हैं वो अकॉर्डिंग टू साइड्स होता है, दूसरे पार्ट्स को जब नेमिंग करते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू एंगल्स होता है. सो वी क्लासिफाइड, वी कैटेगराइज्ड आवर ट्रायंगल इनटू 2 different parts. First category according to sides and second categories according to angles. Okay, दो पार्ट में इसको हम तो डिवाइड करते हैं, और एक पार्ट को जो नेमिंग करेंगे वो हम एंगल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, दूसरे को जब करेंगे तो अकॉर्डिंग टू साइड करेंगे. सो नाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दैट approximately we consider 6 types of triangle. Okay, that mean अगर हम बात करते हैं तो 6 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं. ओके, अब 6 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं. आई कॉल्ड ऑल दोज थिंग टोटल. ओके, 6, दैट मीन टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यू कैन कंसीडर 6. अगर हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ओके, बट वी हैव टू नो हियर 6 types of triangles we categorize, but according to what? 6 types के टोटल तो होते हैं, बट उसका हम नेमिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ये यहाँ पे समझने वाली चीज़ है. सो you know there are 6 different types of triangle. So three of them we naming according to its side and other 3 are naming according to angles.
जो टोटल आपके 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स है उसमें 3 जो है वो 3 को हम अकॉर्डिंग टू साइड नेम करते हैं एंड अदर जो 3 होते हैं उसे हम अकॉर्डिंग टू एंगल्स नेमिंग करते हैं. ओके, सो कॉमन है. I written that there are 6 types of triangle, 3 with respect to sides and 3 with respect to angles. टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए? 6. उसमें से 3 क्या हो गया आपका? 3 का जो नेमिंग होगा वो अकॉर्डिंग टू साइड होगा एंड 3 की नेमिंग जो होगी अकॉर्डिंग टू एंगल्स हो गया. सो इन शॉर्ट अगर हम कुछ करना चाहें यहाँ पे तो कंसिडर दैट इफ आई विल टेक हियर a triangle, I give a name ABC. So in this triangle ABC, in triangle ABC, you can recognize that it has 3 sides. Name of sides क्या हो जाएगा? Name of sides. So name of side, first side, this is AB. Next is this one, BC, and next this one, AC. When you can recognize name of angles, you can consider that this angle, you can say here angle A, this angle, angle B, and this angle, angle C. Or you can name it angle BAC or angle ABC and angle ACB. So you can see this 3 type we categorize, we put name according to their sides. Okay, and next 3 names put by according to angles. Okay, तो अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इस ABC में ये आपके एंगल्स है और ये तीनों साइड्स है. जहाँ तक बात रहती है वर्टेक्स की, सो दिस मीट पॉइंट वेयर 2 sides meet, this point is known as vertex. So you can say its name vertex A, vertex B, this point, and next is vertex C, this point. Okay, but we categorize by 2 ways according to side and according to angles. So come on and let's check total number of triangle. Okay, so now this is triangle. Okay, so triangle are divided. A triangle is divided by 2 ways. First according to sides and second according to angles. So according to side, a triangle has 3 types. Okay, there are 3 types of triangle according to sides. First is named as equilateral triangle. What is the meaning of equi? So equi means equal. That means if a triangle having all sides equal, it's mean suppose ABC a triangle, okay, it's all length of all sides, that mean AB. If I consider here ABC, so equilateral means all length of all sides are equal. That means length of AB equal to length of BC equal to length of AC. Suppose that if question is given that AB is 5
given that AB is 5 centimeter and you have to find out AC in equilateral triangle. अगर क्वेश्चन है कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसमें एक साइड का मेजरमेंट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो आप पता करो कि नेक्स्ट 2 साइड्स के मेजरमेंट कितने कितने होंगे. तो सब this is an equilateral triangle, that means its all sides are equal. It's mean if AB is 5 centimeter then BC and AC also is 5 centimeter. Understood? कि अगर एक का लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो अदर टू के लेंथ्स भी 5 सेंटीमीटर होंगे. वाई? बिकॉज दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन शॉर्ट, इक्विलेटरल ट्रायंगल having all sides equal. Okay, that means AB is equal to BC is equal to AC. Next category is isosceles triangle. Okay, next category is isosceles triangle. What is the meaning of isosceles triangle? So only check this. Iso means two sides are equal. Any two sides. If consider A, B, C, okay, then AB is equal to BC. If a triangle having two sides equal, अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है, कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स आर इक्वल, then this triangle is known as isosceles triangle. If a triangle having two sides equal, any two sides, you can consider AB equal to BC or you can consider AB equal to AC or you consider AC equal to BC. कोई भी दो side. Iso means two. So any two sides, a triangle having any two sides equal, then this triangle is known as isosceles triangle. Okay, कोई भी दो side इसका equal होगा. Iso means two. Third point is, name of third angle according to side is scalene triangle. So what is the meaning of scalene triangle? That means okay, so you can see here its all sides are different length. इसके जितने भी sides हैं उसके different length है. मतलब that mean आप बोल सकते हो a triangle having all sides of different lengths. A triangle having all sides are different lengths is called scalene triangle. Okay, एक triangle जिसके सारे sides equal हैं. That mean ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 8 सेंटीमीटर. You can see here its all sides are different. Length of all sides are different. So this type of triangle is known as scalene triangle. Okay, so according to sides, there are three types of triangle. First name is equilateral triangle because its all sides are equal. Second is known as isosceles triangle because its two sides are equal. And scalene triangle, that means all sides are different length. Okay, next you can categorize another three parts. So first part is known as acute angle. Acute means small baby is known as cute baby na. So acute, that means its all sides measurement is less than 90 degree. Angle, measurement of angle is less than 90 degree. A triangle whose angles measure less than 90, that means, yes, you can write it 60 degree, you can write it 70 degree, 50 degree. Okay, so you can check it here. Its all sides are less than 90. ऐसा ट्रायंगल जिसके एंगल का मेजरमेंट 90 से लेस हो उसे हम एक्यूट बोलेंगे. एंगल्स का मेजरमेंट
90 डिग्री से लेस होना चाहिए. ओके, इट शुड बी लेस देन 90 डिग्री. Angle of measurement of angle should be less than 90 degree is known as acute angle, acute triangle. Okay, next is obtuse. So obtuse means which is more than 90 but less than 180. Okay, it's mean a triangle having one side, a triangle one of whose angle, a triangle, just suppose this is triangle. Okay, so obtuse means greater than 90 but less than 180. obtuse का मतलब होता है जो 90 एंगल उस मेजरमेंट इज मोर देन 90, एक एंगल जिसका मेजरमेंट 90 से ज़्यादा हो बट 180 से लेस हो. So this is known as obtuse angle. So according to angle we categorize here triangle now. That's why we have to consider measurement of angles. So you have to consider one of whose angle measure any angle, you can take any angle, one of whose angle measure more than 90 degree. Okay, 90 से ज़्यादा होना चाहिए. So this is, if this is more than 90, that means if this is 120, okay, more than 90, that means 120. So it should be considered that 60, then you can say 60, then 12 6 18. No, so you have to take here 50 and here take 10. Okay, so simply you have to consider only one angle. It's one angle having measurement more than 90 degree. obtuse में क्या होगा कि वैसे ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे. I have to consider those triangles whose one angle measurement, one angle's measurement is more than 90 degree. one angle's measurement, एक एंगल का मेजरमेंट 90 से ज़्यादा होना चाहिए. ओनली वन, एक एंगल का. वी डोंट हैव कंसिडर हेयर अदर टू एंगल्स. वन एंगल जो होगा इसका 90 से ज़्यादा होना चाहिए. ओके, थर्ड एंगल इज थर्ड ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल. So what is the criteria here? That its measurement of one angle is equal to 90 degree. इसके एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होगा. वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इज 90 डिग्री. दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज राइट ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में आपका एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा. ओके, सो हियर यू कैन see there are totally 6 types of triangle. 3 are according to sides and 3 are according to angles. Okay, according to name, you know that equilateral, that means all sides equal. Isosceles, that means only two sides are equal. Scaling, that means no, all sides are different lengths. And here acute, that means all angles are less than 90 degree. Measurement of all angles is less than 90 degree. Obtuse, one of angle is more than 90 degree. Okay, and right angle, one angle measurement is equal to 90 degree. Okay, so this is the criteria and this is the name, also name of triangle. Okay, now in this part you know what is triangle, how many parts of triangle. Third point, that by how categorized triangle, that means types of triangle, how we divide the triangle. Okay, and last part is what the name of triangles. Okay, so in this video you know that ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ट्रायंगल के
कितने पार्ट्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं उसके, एंड आप एक ट्रायंगल को कैसे कैटेगराइज करते हो, कैसे उसको पार्ट्स करते हो। तो इस वीडियो में अभी तक आपने इसके इंट्रोडक्शन को जाना कि कितने टाइप्स के एंगल्स, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स आपके मैथमेटिक्स में कंसीडर्ड होते हैं। ओके, नाउ one of the most important property of triangle, what this is that this is a triangle, so measurement of all angles of triangle is sum of all angles of triangle is 180 degree. This is the rule of having a triangle. ओके, ये एक रूल है कि अगर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो भी होंगे, इसके सारे एंगल्स के मेजरमेंट, उनका जब सम करेंगे तो वो 180 होना चाहिए। दिस इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम property of triangle. Angle sum, that means you have to sum the all angles, सारे angles का sum करना होगा। ओके, and it should be equal to 180 degree। जब सबको ऐड करोगे तो ये 180 ही होना चाहिए, 180 ही होना चाहिए। then this is called a triangle if its measurement, its sum is more than 180 or less than 180, then you not consider it is in a triangle। अगर किसी ट्रायंगल का मेजरमेंट 180 से ज़्यादा या 180 से लेस हो जाता है तो उसे हम ट्रायंगल में कंसीडर नहीं करते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। if sum of all angles is 180 degree, then this is considered in a triangle, but if it less than 180 or more than 180, then this is not considered in a triangle। Understood? So remember, this is very important property, angle sum property of a triangle। Now we have to check that how the sum of all triangles, sum of all angle, okay, of a triangle is 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक ट्रायंगल के एंगल का सम जो है वो 180 कैसे होता है। we have to prove that the sum of the angles of a triangle is 180 degree। so this is the theorem, it is most important theorem of triangle। According to this theorem, the sum of the angles of a triangle is 180 degree। This is compulsory that when we add all the angles, it should be 180 degree। Okay, so here we have to prove that how all angles, sum of all angles is equal to 180 degree। Okay, so I have to prove here angle sum property of a triangle, and according to angle sum property of triangle, that sum of the angles of a triangle is 180 degree। Understood? So now you can see here, I consider here ABC triangle, I consider here triangle ABC, okay, but here you can't recognize that how I can prove here that all sum of all angles is 180 degrees. So I have to do some construction here. What construction? That I have to make a line. Okay, one thing, just I'm going to draw here triangle. Okay, A B C. So this is the triangle ABC, and I have to draw some construction here. So just draw a straight line, okay, and give its name that XY। now just put some name for angles। so here 1,
angle 1, angle 2, angle 3, this one angle 4, and this one angle 5. Okay, now what construction I done here, that this line, remember that this line is parallel to this line BC. Okay, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, that I have to draw a parallel line XY. Okay, I have to draw XY parallel to BC. So you have to write that through A. This is the A. Okay, through A, draw a line XY parallel to BC. I construct here that I draw a line XY which is parallel to BC. एक ऐसा लाइन कंस्ट्रक्ट करना है A के थ्रू जो BC के पैरेलल हो. Okay, this is the construction. First I have to do construction here. Okay, now next, and mark the angles. Mark the angles as shown in the figure. Okay, through A, draw a line XY parallel to BC and mark the angles as shown in the figure. That means naming. Okay, next. But before writing, I want to explain there, if this line is parallel to this line, that means this one is transversal. That means AB is a transversal. If XY, line XY parallel to BC, then AB is a transversal. If AB is a transversal, that means for this line, this angle equal to this angle. How? According to alternate angles. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो AB ट्रांसवर्सल हुआ, और अगर AB ट्रांसवर्सल हुआ तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होगा अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंगली. तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स, सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. Same here, if line XY parallel to BC, then AC be a transversal. ये ट्रांसवर्सल हो गया जो कि काट रहा है. So again 4 equal to 5 by which property? Alternate angles. Okay, lastly this is a straight line. Okay, that means according to linear property, angles which are made on a straight line, sum of angles is 180 डिग्री. तो इसका जो सम होगा, सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा. ओके, दिस इज द लीनियर प्रॉपर्टी. तो अकॉर्डिंग टू फिगर यू नो. नाउ जस्ट राइट डाउन वट एवर आई कंसिडर्ड हेयर इन फिगर. सो नाउ XY पैरेलल टू BC and AB is a transversal. Then angle 1 equal to angle 4. Angle 1, wait here. Okay, just remind all here. First I done here construction. Okay, first you do construction, and according to construction you can see that this XY is parallel to BC. XY जो है वो BC के parallel है. Next mark the angles, angle 1, angle 2, angle 3 shown on the figure. Next is whatever you done here, just consider that first, if XY parallel to BC, then
AB is a transversal. If AB is a transversal, you can see if AB is a transversal, then this angle is equal to this angle. By which property? Alternate property. So I written here XY parallel to BC and AB is a transversal, then angle 2 equal to angle 4. जो 2 होगा वही 4 होगा. By which property? Alternate angles. Same thing if XY parallel to BC, then angle 5 equal to angle 3. By which property? Alternate. Okay, so XY parallel to BC and AC is a transversal, then angle 5 equal to angle 3. By which property? Alternate angles. Next very important property, that linear property. That means angles which are made on straight line, its measurement is 180 degree. एंगल्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं उनका जो मेजरमेंट होता है वो 180 होता है. ओके, सो you can recognize here angle 4, angle 1, angle 5 all are lie on straight line xy. all are line in straight line xy. सारे जो है वो कहाँ पे हैं? लाइन xy पे हैं. So is line xy is a straight line, that's why its sum, that mean angle 4 plus angle 1 plus angle 5 equal to 180. अगर straight line पे angles बने हुए हैं, that mean its measurement is equal to 180. Okay, it should be 180. Straight line, according to straight line property, linear property, sum of angles on straight line is equal to 180. तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बने होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 होता है. सो आई थिंक यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, so I written all those things, but according to this theorem in starting I have written that the sum of the angles of a triangle, that means angle 1 plus angle 2 plus angle 3, this is the sum now. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3. So I write here angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Okay, so 180 degree, that means if I add all the angles here, this value is 180 degree. So just add all the angles. Angle 4 plus angle here 1 2 3, yes, angle 4 plus angle 1 plus 5, 4 plus angle 1 plus angle 5. Okay, just check it. This is the sum of angles of triangle and this is by linear property. Check it. ये दोनों equal होगा. How? Because you write here the sum of angles of a triangle is 180 degree, and when you add all the angles on a straight line, it consider 180 degree. Okay, so you can write like this. Now next thing is but angle 4 plus angle 1 plus angle 5 equal to 180 degree. Just write here linear property. Okay, तो ये कैसे हुआ? linear property के थ्रू हुआ. Now जब ये linear property के थ्रू ये है, therefore you can write here, just change angle 4 and angle 5. Okay, so angle 4 is equal to angle 2. 4 जो है वही angle 2, both are equal, so just skip 4 and write there 2. So angle 2 plus angle 1 plus and angle 5 is equal to 3. That means just skip angle 5 and put it there 3.
180 degree. Now just arrange properly. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equal to 180 degree, and this is the main thing. The sum of the angles of a triangle is 180 degree. Proved. Okay, if you have any problem in this property, just ask in my comment box. Thank you everyone. Have a nice day.